Hi everyone, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड एंड जेएमडी एकेडमी एज वेल। तो आज हमारे साथ एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बैठे हैं। नाम क्या है सर आपका? माय नेम इज अभिषेक यादव सर। हाँ, अभिषेक जी बैठे हैं हमारे साथ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है और आज एक मॉक इंटरव्यू देने वाले हैं। एक मॉक इंटरव्यू हमने पहले डाला था जहाँ पर आप लोगों का आया था कि आप प्लीज़ सर हमें फीडबैक भी दिखाइए बच्चों का। तो सर यही एक इंटरव्यू है जहाँ पर आपको टीचर्स का फीडबैक भी मिलेगा, बच्चे का इंटरव्यू मिलेगा और पूरा का पूरा अनकट वर्जन के साथ ये कितनी जगह अटका है एंड ऑल द स्टफ्स। हैविंग सेड दैट, प्लीज़ ये वीडियो को वॉच कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता। हमारे 3 फैकल्टीज़ बैचे, मैथ्स की सपना मैम, इंग्लिश के रुद्रा सर, फिजिक्स के राहुल गिरी सर एंड तीनों टीचर्स इंटरव्यू लेंगे। मैं सिर्फ एक मूक दर्शक बैठ के देखूंगा। Alright, so what's your name? माय नेम इज अभिषेक यादव। Abhishek. यस मैम। Okay. So Abhishek, how are you doing today? सर आई एम गुड। You're good? Yes, sir. Okay, any kind of nervousness? नो सर। No? Not at all? नो सर। Okay, sounds good. Okay, so let's start with your introduction. सर थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अभिषेक यादव। आई एम 19 ईयर ऑफ एज। माई नेटिव सिटी इज अयोध्या. Ayodhya is the birthplace of Lord Rama and also famous for tourists. And Ayodhya became now more popular because a new temple of Lord Rama is built there. About my education qualification, I completed my schooling from MLM Inter College, which is affiliated to UBO. I scored 84% in 10th grade and 73% in 12th grade. There are 5 Alright, members in your my 12th family. percentage again? Sir, 73%. Sorry? Sir, 73%. 73%. Yes, sir. Okay, why do you have a decline of percentage in 10th and 12th? Sir, I always the average student. I scored good marks in my 12th because I stay focused on my time management and studies. But in my 12th, I made some poor choices with my studies. Like I spent lots of time to playing cricket with my friends that time, and also I did not attend regular classes in my school, which impact my understanding my power the material. But sir, see the forget I see like I made some significant improvement in my studies. So I believe sir, I positively believe sir, which helped me in studying moving forward. Okay, please continue with your introduction. My name is Abhishek Yadav. Now, from where you left the introduction. So there are 5 members in my family, and I have also 2 siblings. My father's name is Mr. Arvind Kumar Yadav. He's a farmer. My mother's name is Mrs. Manju Devi. She's a homemaker. About my hobbies, I love to play cricket with my friends in my free time. And about my strengths, sir, I am very collaborative and responsible person. My ambition is become a successful merchant navy officer and makes my family feel proud, sir. Okay, so you play cricket. Yes, sir. Have you played this cricket as profession also? Maybe No, sir, in just- your school time on district level or No, state sir, level? only sir school time just. Okay. Any achievement of yours which you would like to highlight? No, sir, I don't have any achievements, sir. Okay. All right. So your strengths again? Sir, I am a very collaborative and responsible person. I Can like you- to work in a teams. I think this is my strongest attribute. Okay. Can you please give me a few examples from your past life? I want to share some example of my past, sir. When I was in class 12th, on the day of Environment Day, there is a competition of my school that whoever batch sir, who plants the lots of number of teams in the area where the dead trophies, they got a prize. And my class teacher told me that to me that gather some students from your batch and participate in a competition. Then I made some student and gathered some student and participate in the competition. We secured second position, and after that onward, whenever there is a competition in my school, I also participate as a leadership from my batch, and I think this quality will also help me to become a good friendship relation on board ship. And one more thing, sir, I want to add there, sir, and I have a very- Wait. In the last question, you told me that you don't have any achievement. Yes, sir. But right now, in this answer, you are telling me about your achievement, about the leadership, about the competition. Sir, this was just a simple competition in my school, not a Even big then, level, sir. don't you think you should highlight that? How will you decide which achievement is big and which is not? Okay, all right. Any weakness? So, sir, sometimes I am very overthinking, but sir, sometimes I think much about my family's responsibility like this, and which came a negative thought in my mind. But I am now trying to overcome it by meditation, and I follow my proper active lifestyle, like regular doing proper exercise to fit mentally and to fit my body physically and mentally. Okay.
So suppose you told me that overthinking is your concern, Yes, yes. is your weakness, and you want to. Not all time, but sometimes, sir. Yes, sometimes. Okay. And you are improving it, you are overcoming it by the help of meditation. Yes, sir. Okay. Suppose I am facing the same issue. Yes, sir. Okay. And I want to ask, how do you meditate? Can you give me an example? Or what is the process of meditating? So like when I wake up at 6 a.m. After that I take a long breath and I go for a morning exercise. So I think this is helped me to improve my. No, I understand what is helping you, but I'm trying to understand the process of meditation which you are following. How to meditate? Sir, like a simple sir breathing, and we can do that, sir. And yoga, sir. I am breathing right now. Yoga is different and meditation is different. My question is, how do we meditate? Or how do you meditate? Forget about yoga. Yes, sir. Forget about breathing. Forget about waking up early in the morning. Just tell me how to meditate. Sir, first I think you should be in a peace place where no one is there, and you should take a proper rest. After that, sir, and after that, sir, start like meditation. How? You told me you do meditate, right? Yes, sir. Okay, how? Okay, alright. Why do you want to join Merchant Navy? Sir, I came to know about this field when I was in class 12th. Actually, my class teacher was told me about this field. He told me all the pros and cons of this field. Like this field makes us physically and mentally strong. After that, I started searching about this field, and I found that, sir, as I belong to a middle class family, so I think Merchant Navy provide me that financial stability which lacks in many jobs. And one more thing, sir, I always admire the dedication and hard work of my father. He is forming for so many years, but despite his effort, did not got a respect and pride. And after becoming Merchant Navy officer, my aim to provide a respect and recognition he deserves. As my father navigate in a farming, I want to navigate through the sea and contribute to the global economy while priding my family. And one more thing, sir, I add there that the responsibility is interested to seafarer, as we are not only responsible for the cargo as well as well-being of the crew member. And so the area where I live, in fact, there is no Merchant Navy officer, and people don't know much about this field. After becoming a Merchant Navy officer, I get an opportunity that I can inspire young ones to join this field, which is also honor moment for me and my family. So I am glad, sir, I choose Merchant Navy as my career, sir. Okay. What is the one point due to which you think that you may get rejected? Sir, I think my confidence level, sir. Sometimes I little bit nervous, so I think my confidence level may reject me, sir. Well, in the beginning of the interview, I asked you, are you nervous? You said no. But now you are telling that you get Sir, nervous. when I was stuck in some questions, that time I feel like I am a little bit nervous, sir. Okay, alright. And one last question. What if your senior is harassing you? Sir, firstly, if I seniors harass me, firstly I will see that it was a serious matter or just joking. And if it was a serious matter, then I will inform it to my senior, who is the chief officer. But if I didn't got any responsibilities from my chief officer, then I will go with the captain and follow the procedure and protocols which is there on board ship. Okay, alright. Sabnam will be helping you with the further questions. Okay, ma'am. Okay, hello Abhishek. Hello, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. Okay, Abhishek, can you please tell me which one is your favorite subject from PCM? Ma'am, my favorite subject is physics. Physics is your favorite subject. Sure, we will ask some question from that also. So from now, can you please define acid and base? Sir, ma'am, according to Levy's concept of acid and base, acid are those substances which can gain lone pair of electron, and base is those substances which can donate lone pair of electron. And according to Brevester's law, according to Brevester's concept of acid and base, acid are those substances which can release hydrogen plus ion in aqueous solution, and base are those substances which can release hydroxide ion in aqueous solution. Okay, define molarity and molality. Okay, sir, ma'am, molality is the number of the moles in a per liter of a solution, and molarity is the number of moles in a per kilogram of solvent. Very good. Can you please define why molality is preferred over molarity? Sorry, ma'am. Why we prefer molality over molarity? Why we prefer molarity over molality?
Sorry, ma'am, I don't know about now, but after interview I learned about it. Sure. Okay, what is the major component in LPG? Ma'am, in LPG, sir, methane. Methane is the major component. Okay. Exothermic and endothermic reaction. Please define. Ma'am, exothermic is a chemical reaction in which heat and energy release, and endothermic is also a chemical reaction in which heat is absorbed by the metal. The example of exothermic reaction is like acid and water, and burning of a candle. And about endothermic reaction, the melting of ice is an example of endothermic reaction. Okay, Abhishek. Can you please define what is pi? Ma'am, pi is the mathematical constant. It is a ratio of a circle Faraday to its diameter. The value of pi is 3.14159 approx. Okay. What are the applications of pi? Ma'am, pi plays a crucial role in a mathematics, like in a geometry, trigonometry, and also it is used to measure distance between the planets. So these are some applications of pi, ma'am. Okay. Pi, what is the value of pi? Ma'am, 3.14159 approx value. Is it a rational number or irrational Ma'am, number? pi is irrational number because we cannot express in a simple terms, like What- a simple fraction, ma'am. Okay, okay. What is the formula of tan 3 theta? Ma'am, 10 3 theta. tan 3 theta. Ma'am, 3 tan theta minus tan q theta upon 1 minus 3 tan square theta. What is 1 radian? Ma'am, radian is a unit of angle, and 1 radian is the angle subtended by the center of the circle by an arc that is equal to the radius of the length. Its formula is theta equal to L upon R. How can we convert any angle which is in degree Yes, ma'am. into radian? Ma'am, we can calculate it pi upon 180. Okay. So do you know that one of the unit of angle is minute and seconds also? Yes, ma'am. So what is the relation between degree and minutes? Ma'am, 1 degree equal to 60 minutes. 1 degree is equals to 60 minutes. Okay, please tell me what is centroid? Centroid. Ma'am, centroid is where the three median of triangle intersect, and it always lie inside the triangle, and median always divide the triangle in the ratio of 2:n, and also median divide the triangle in the two triangle in equal areas. Okay. In what ratio centroid divide the median of the triangle? Centroid divide the median of triangle, ma'am, in the ratio of 2:1. 2 ratio. Okay, what is the formula of volume of a sphere? Volume of a Sphere. sphere. Ma'am, 4/3 pi r cube. What is the formula of total surface area of a cylinder? Ma'am, 2 pi r into r plus h. Total surface area of a cylinder. Total surface area of a cylinder. Ma'am, 2 pi r into r plus h. Okay. What is the formula for the volume of a cuboid? Volume of a Cuboid. cuboid. Ma'am, 2 in bracket length into breadth into height. Okay. What is average? Ma'am, average is the sum of the total observation upon the number of the observation. Okay, Abhishek. Now last question from my side. Please take a pen and note down a question. Okay. There is a ship moving towards a cliff. Height of the cliff is 100 meter. The angle of elevation is 30 degree. 30 degree. After moving 20 meter towards the tower, towards the cliff, After moving 20 meters towards the cliff, angle of elevation become 45 degree. Yes, ma'am. What is the initial position? What is the initial position of the ship with respect to the base or the foot of the cliff?
I think made some mistake there. Okay, I'll check it. Thank you so much, Abhishek. That's it from my side. All the very best. So Abhishek, you have mentioned physics as your favorite subject. Yes, sir. So we will start with some basic questions. Okay, sir. What is light year? So light year is a unit of length used to measure large astronomical distance. Its value is 9.46 into 10 to the power 12 kilometer. Okay. So how will you differentiate between distance and displacement? Okay, sir. Sir, distance is the length of the object traveled by. Distance is your length of the part traveled by the object, and displacement is the shortest length between the final position and initial position, sir. And we can change. We can never change distance, but we can change displacement, sir. And also, distance is a positive, and displacement can be positive, negative, and zero, sir. Okay. So suppose you are standing in middle of a frozen lake. Frozen. Frozen lake. Okay, sir. That means ice is present there Yes, sir. and the ice is smooth. Yes, sir. So how will you come to the shore? Sorry, sir. I am not understanding the question, sir. Suppose that you are standing in the middle of a frozen lake. Okay, sir. Frozen lake means the surface is icy. Okay, sir. So how will you come to the shore? Sorry, sir. I don't know about it. Okay. What is friction? Sir, friction is a resistance when there are two objects in a contact. It always not oppose the motion of the moving object. While walking, the friction acts in a backward direction, sir. Okay. Can friction be zero? No, sir. Friction cannot be zero. Is Sir, there any friction acting on this? No, sir. Friction acts only in the moving object, sir. Friction only acts on moving object, Yes, sir. or whenever there is a tendency to of motion. Yes, sir. We can say that tendency of object to push like. Tendency of motion. Can you differentiate between kinetic energy and potential energy? Okay, sir. Kinetic energy, a magnitude of the energy that is virtue by its position, and about the potential energy is the amount of the energy by which of its motion, sir. The formula of kinetic energy is 1 upon 2 mv square, and the formula of magnetic potential energy is mgh, sir. Okay. And we cannot transfer kinetic energy in another form, but we can transfer potential energy in other form, sir. Okay. So, what is gravitational potential energy? Sorry, sir, I don't know about it. What is law of gravitation? Sir, law of gravitation states that every particle attract every other particle in the universe with the force, with the product of the mass and the square of the distance between them, sir. And what is gravity? Sir, gravity we can say that, sir, sir, gravity is the force between the two attraction of the object in the universe, sir. In the universe. Yes, sir. Okay. So, how does the weight of an object changes when we move from equator to pole? Sir, sorry, sir, I don't know about it. What is acceleration due to gravity? Acceleration, sir, acceleration, the rate of change of velocity due to the force of gravity is known as the acceleration of gravity. Its value is 9.8 meter per second. Okay. So, how does the value of acceleration due to gravity varies in moving from equator to pole? Sir, in equator, the gravity value is 0, sir, and on the poles, its value is 9.8. 0 and poles 9.8. At the poles are 9.8, at the equator is 0, sir. What is Kepler's third law? Sir, Kepler's third law states that the square of the period of the planet around the sun is directly proportional to the q of the semi-major axis. Okay. And what is first law? Sir, first law states that each planet revolves around the sun with an elliptical orbit. At one of the sun is Foci. How does the time period of a satellite changes when we increase the radius of its orbit? Sorry, sir, I don't know about it, but after interview, I don't know about it. Okay. Let us move to fluid mechanics. What is pressure? Sir, pressures we can say that force applied per area on a surface of the object. Its formula is P equal to F1A. Can you repeat? Sir, pressure is defined as a force acting per unit area on the surface of the object. Its formula is P equal to F1A. And what is the unit of pressure? Sir, kilogram per meter square, sir. So pressure is a scalar quantity or vector quantity? Sir, pressure is a scalar quantity, sir. Why force is a vector quantity and area, we can consider area as well as a vector quantity as well. So why pressure is a scalar quantity? Sir, because in pressure there is only magnitude but there is no direction, sir. Okay, direction is not specified. Can you explain Pascal's law with an application? Sir, Pascal's law states that when an incompressible pressure exerted on a confined fluid
It exerted in all directions throughout the fluid, even a change in the magnitude of the fluid. It always used in a closed surface, and it is based on the fluid of the transmission. And for example of sir, Pascal is like hydraulic lift. In a hydraulic lift, when we push down a small piston, the pressure created by the small piston is generated into the large piston, and this large piston experience a large force. This allowing the lift to heavy objects with little force. We can say that efficient force. Okay, so in your definition, you have used incompressible Incompressible fluid. pressure. So what is an incompressible fluid? Sir, incompressible pressure, we can say that in which density is same and there is no viscosity, sir. Density is? Density is same, sir. There is no viscosity. And what is density? Sir, density defined as mass per unit volume. Mass per unit? Volume. How does density varies with pressure? Can you repeat, sir? How does density varies with pressure? Pressure? What is the effect of pressure on density? Simple. Sorry, sir, I don't know. Okay. Don't know. Can you explain law of flotation? So, law of flotation states that when the weight of the fluid displaced by the image of the body is equal to the total weight of the body, that body displaced in a liquid. And for example, iron nail, which is not sink in the object, but which is sink in the object, but as if float on a water, because the buoyant force acting on the sink is less than the buoyant force. So that's why, sir, iron nail is float on a sink on a water. Okay. So Because of the law of flotation, sir. what is buoyant force? Sir, buoyant force is an upward force exerted by the fluid that oppose any object float on a liquid. Suppose that we have a container of liquid Yes, sir. and we place it in a gravity free space. Yes, sir. Okay. So will there be any buoyant force exerted experienced by any object placed in that container? Sir, buoyant force is only applicable in a fluid, sir. Suppose we have a container Yes, sir. full of fluid Oh, sir. and it is placed in gravity free space. Yes, sir. There is no gravity. Yes, sir. So if we place an object in that container, will it experience any buoyant force? Yes, sir. It experience any buoyant force because buoyant force is not depends on a gravity, sir. Okay, buoyant force does not depend on gravity. Yes, sir. Okay. What is Kirchhoff's loop law? Sir, Kirchhoff's loop law state that the sum of the algebraic sum of the current in a loop is 0, sir. Okay. Is it Kirchhoff first law or second law? Sorry, sir, it's Kirchhoff's second law. I can explain again, sir. In the algebraic sum, the potential difference in a meeting at a loop is always 0, and it is based on the law of conservation of energy, sir. Law of conservation of Energy, sir. So what is conservation of energy? So, law of conservation of energy is to say that in an isolated medium, there is no transfer of energy. Energy is constant. We can transfer energy in one form to another form. Okay. What is the difference between alternating current and direct current? Sir, alternating current is, change its direction and also its magnitude, but direct current never change its direction. And the frequency of alternating current is about 50 Hz to 60 Hz, but in a direct current there is no frequency, sir. Okay. So name a device which convert alternating current into direct current. Sir, rectifier, sir. How it does is also used in a inverter, sir. Can you explain the working of rectifier? Sir, I don't know much about the application of rectifier, but sir, I know it's a high voltage current. It's converted into a normal current like a DC current. Okay. What is a diode? Diode. Sorry, sir, I don't know what. How semiconductors are different from conductors? Sir, semiconductor is a conductor which capability is between the conductor and insulator, sir. Hmm? And conductor are those substances which allow electricity to flow through it, sir. Flow through it. Okay. Explain laws of reflection. Laws of reflection. Sir, there are two laws of reflection. The angle of the incident is equal to the angle of the reflection, and second law of reflection is known as the Snell's law. And according to Law of reflection. Sorry, sir, the incident ray, the reflected ray, and the normal lie all in the same place. And second law? Second law is, sir, the angle of the incident is equal to the angle of the reflection, sir. What is angle of incidence? Sir, angle of the incident which toward through the normal surface. Which toward through the surface, sir. Which? The light ray which coming toward through the surface is known as a, sir, incident ray. Angle of incidence. Angle of incidence. Incidence. Sir, when a light is coming toward a surface, the angle made by the light ray is known as the angle of incidence, sir. Okay. Is there any reflection occurring in this room? No, sir. No. No, sir. So how can you see me? Can you see me? Yes, sir. On the effect of which law? Reflection or refraction? Sir, reflection. Reflection. How we see objects? Can you explain?
Sir, only because of reflection, sir. Reflection? Reflection, sir. Sorry, Reflection. Sir. Reflection, sir. Reflection is used for a mirror and reflection is used for a lens, sir. Okay. Explain mirage. Sir, mirage is an optical phenomena. Is based on a total internal reflection of a distant light of a distant object. When a light ray coming from a cold air like a denser medium to hot air like a radiant medium, it get totally we can say that totally undergo reflection for the observer. The light coming from the ground. Okay. My final question. Yes, sir. What are the condition of total internal reflection? So total internal reflection. Sir, first thing, light move from denser medium to radiant medium, and the angle of the incident is greater than the critical angle. Okay. Yes, sir. That's it from my side. Okay, Abhishek, Yes, sir. how would you rate your interview out of 5? Sir, according to me, 2. 2? Yes, sir. Okay. There are many things that I need to talk. Yes, sir. I will be talking about negative points. Yes, sir. Okay. First, when you entered, you asked for the permission. Yes, sir. Okay. Then you wished us. After greeting us, you sat without taking permission. Yes, sir. Did any of us said that you may sit, or did you ask for it? May I sit? No, sir. No. It's my mistake, sir. It's a mistake. Okay. Second thing, when you started in the beginning, it was not feeling that I am talking to a human, but instead it was sounding like you are like a machine. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप हमसे बात कर रहे हैं. ऐसा लगता भाई मैंने पूछा इंट्रोडक्शन और आपने मशीन की तरह ऐसे करके चालू कर दिया. एक भी बात को आपने फील करके नहीं बोल रहे थे यार कि सर माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, दैट आई मीन जो कनेक्शन बनना चाहिए वो जीरो था यार. ठीक है. तीसरी चीज़, बहुत जल्दबाजी कर रहे थे आप आंसर करने के लिए. क्वेश्चन को ध्यान से सुना भी नहीं और आंसर देना शुरू कर दिया. और नेक्स्ट चीज़, रेट ऑफ स्पीच बहुत फास्ट है. So, nervousness का just नर्वसनेस ठीक है मैंने मान लिया, ठीक है, लेकिन रेट ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा तेज़ है. मेरे तक को प्रोसेस करने टाइम लग रहा था कि आप कह क्या रहे हैं. ठीक है. सर और मैम में डिफरेंस नहीं पता. सर को मैम बोल रहे हो, मैम को सर बोल रहे हो, क्या था ये? मैम को देख के बोला सर. हाँ मैम को देख कर सर मैम. हाँ, और सर को मैम भी बोला. नेक्स्ट चीज, वन वर्ड आंसर काफ़ी सारे दिए आपने, आउट ऑफ विच वॉज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ LPG, मीथेन. क्या हम इसे कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हैं? यस सर. व्हाट शुड बी दिस कंप्लीट सेंटेंस? सर, कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? so the main component in a LPG is a methane, like. यस. ये जो वन वर्ड के आंसर हैं ये सही नहीं है किसी भी इंटरव्यू के लिए. तो वन वर्ड आंसर नहीं दे रहे हैं टिल द टाइम इंटरव्यू खुद से कहते भाई वन वर्ड में आंसर दे, और वो खुद से यूजुअली नहीं कहेगा. तो वन वर्ड में आंसर नहीं देना, पूरा सेंटेंस यूज कर. नेक्स्ट चीज, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुन रहे थे. एक्टिव लिसनिंग बहुत बड़ा कंसर्न था तुम्हारे साथ. बहुत सारे क्वेश्चंस हमको रिपीट करने पड़े. कि हम जैसा मैंने कहा, मैं शुरू में इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आपने ध्यान से सुनी नहीं रहे थे. बस आपको जल्दबाजी थी कि ये क्वेश्चन पूछे, मैं फटाफट आंसर दे दूँ, यहाँ से फारिग हो जाऊँ. सो अभिषेक, ऑन द पॉजिटिव साइड, एज यू टोल्ड मी, यू आप स्टेट बोर्ड से, सो उसके हिसाब से आपके जो बोलने में ग्रामर थी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एरर्स नहीं मिले. ठीक है. दूसरी चीज़, आपने कॉन्फिडेंस को जो कवर करने की कोशिश करी वो स्पीड से करी. ठीक. कॉन्फिडेंस को स्पीड से कवर मत कर. कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपकी बात सामने वाले तक पहुंचेगी और समझ पाएगा. ठीक. इस चीज़ को पॉजिटिवली लेके मुझे जो भी बोलना है धीरे बोलना है, ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़नी. ठीक है. इस तरह से बोलेंगे हम सामने वाला मेरी बात को समझ पाए. ठीक है. चौथी चीज़, आपने जो आंसर्स हैं, इंटरव्यू आंसर्स हैं, उनको ठीक से प्रिपेयर किया है, जो कि साफ पता लग रहा था. ठीक है. तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि कॉन्फिडेंट अगर नहीं भी है, तुझे लग रहा है कॉन्फिडेंट नहीं हो, प्रिटेंड दैट यू आर कॉन्फिडेंट. वो तुझे ऑलरेडी पता है क्या करना है ना. तो खुद पे थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ी और मेहनत कर. ऐसा नहीं कि इंटरव्यू बुरा था, ठीक है, लेकिन आई थिंक आप इससे और ज़्यादा बेटर कर सकते थे. मतलब अगर आप उसे 2 रेट करें, 3 तक आप ले जा सकते थे. I will try my best. ठीक है. और जहाँ तक आपके मेडिटेशन वाले क्वेश्चन की बात है, मैं उसके अलावा ये भी पूछ सकता हूँ भाई चाय कैसे बनाते हैं. मैं सिर्फ आपकी इंग्लिश चेक कर रहा था, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आप मेडिटेशन कैसे करते हैं. ठीक है. अगर आप मुझे सिंपल से एक प्रोसेस बता देते कैसे, फॉर एग्जांपल आई आस्क यू हाउ टू मेक टी. ठीक है. तो इंटरव्यू इस तरह से नहीं देना कि मशीन से बात कर ले, उसको इस तरह से नहीं कि भाई वो किसी इंसान से बात कर रहे हैं. उसको समझ तो आए कि आप हैं क्या, आप कहाँ से आते हैं, क्या बताने अपने बारे में, वो समझ पाए आपको. समझा मेरी बात? और ये रेट ऑफ स्पीच रखेगा तो आराम से समझ आएगा. ओके. Yes, sir, I will try my best.
Good year. So Abhishek, according to me, the technical part was very good because you gave me the answer of everything except few questions, like some were wrong. Like what is the major component in LPG? It is butane, right? Yes, ma'am. And I think CNG methane is used. Yeah. Okay. So I asked 5 questions from chemistry and you were able to ask 4 questions, which was good according to me. I asked 4 questions in mathematics. You were able to answer everything. But one thing you missed, I think 5 questions were there. I also asked the ratio. One thing you missed, at starting when you were starting the formula and the definition of centroid, you said that it divide the triangle in 2:1. After you completed it, Median divide the triangle into which one? no, but the median divide the triangle in 2 equal parts. Centroid divide the median in 2:1. That is the ratio, okay? And in aptitude, I asked 4 questions from aptitude: surface area, cuboid, average. So you gave me the answer of these 4 questions. So according to me, the interview was very good. Technical part was good, but yeah, the rate of speech is very high because it was means we were not able to understand it because you were very fast. So try to speak slowly because you are answering it. You know the answer, so try to speak slowly. That's it from my side. Okay, Abhishek, when it comes to definition, you know the definition, but when we are talking about the application of that concept, you are not aware of it. पहला क्वेश्चन जहाँ पे तुम अटके थे, if you are standing in middle of a frozen lake and that lake is smooth, that means there is no friction. तो कैसे बाहर आ सकते हैं वहाँ से, शोर पर कैसे, शोर किनारे तक कैसे आएंगे? By using न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन. किसी ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन फेंकेंगे, तुम पीछे मूव करोगे, फ्रिक्शन नहीं है तो तुम किनारे तक पहुँच जाओगे. Kinetic energy and potential energy. Formula was correct, but the definition. Kinetic energy is due to the motion, and potential energy is due to the position and orientation or configuration. ये था फॉर्मूला, सही था. When it comes to gravity, ग्रेविटी नहीं मालूम तुम्हें कि ग्रेविटी क्या है. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है, 2 मासेस के बीच का फोर्स लग रहा है, बट व्हाट इज ग्रेविटी? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड बाय अर्थ. अर्थ किसी भी मास पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे, है ना. एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, कैसे वैल्यू चेंज होती है? मैं थोड़ा कंफ्यूज था सी कैपिटल जी की बात और स्मॉल जी की, इसलिए सर. एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी रहेगा ना हमेशा, इट कैन नॉट चेंज. सो इट हैज़ मिनिमम वैल्यू एट इक्वेटर. तुमने 0 बोल दिया था, इक्वेटर पे वैल्यू जी की 0 हो जाएगी. नहीं, 9.8 कहाँ पे रहेगा? इक्वेटर पे रहेगा, और उसके बाद पोल पे इंक्रीज करेगा. अकॉर्डिंग टू दैट वेट विल ऑल्सो इंक्रीज इन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, क्योंकि जी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है ना. वेट क्या होता है? m इंटू जी. तो जी इक्वेटर पे 9.8 है, जी की वैल्यू अब इंक्रीज कर रही है पोल पे जाने के लिए, तो वेट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, है ना. तो ये एप्लीकेशन है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कैसे कैसे चेंज होगा. प्रेशर का तुमने डेफिनेशन बोला, फोर्स पर यूनिट एरिया. इट इज़ नॉट फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया. परपेंडिकुलर इंपॉर्टेंट टर्म है, यह नॉर्मल फोर्स बोलना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फोर्स मेंशन करना पड़ेगा, डायरेक्टली फोर्स नहीं होगा. ओके. एंड किरचॉफ लूप लॉ और जंक्शन लॉ. मैंने किरचॉफ लूप लॉ बोला था, तुमने सीधे ही जंक्शन लॉ स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो वहाँ पे पहले सुन लेना कि क्या बोल रहे हैं, फिर आंसर एकदम बोलना नहीं है, सोच के बोलना है आंसर. और फाइनल आंसर, एंगल ऑफ इंसिडेंस. हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हमें पता होना चाहिए ना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन वगैरह तो याद है, बट जब इनके एप्लीकेशन की बात हो रही है थोड़ा वहाँ पे वीक. ठीक है, तो इसको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वर्क ऑन द एप्लीकेशन एज वेल. सो फाइनली ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, राइट. और बीच बीच में आपको लगा होगा मैं लैपटॉप पे क्या कर रहा हूँ, तो सॉरी गाइस. लैपटॉप के बाद सारे पॉइंटर्स लिख रहा था जो मुझे लगा ज़रूरी हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए और इस बच्चे के लिए. सो हैविंग सेड दैट, 2 चीज़ें सर, थैंक यू वेरी मच. मुझे फीडबैक्स आप लोगों के अच्छे लगे. कुछ जो छोटी मोटी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चीज़ें लगी वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ. फर्स्ट इज़, अच्छा वो आपने रेट के बारे में बोल दिया कि स्पीड बहुत तेज़ थी. मुझे भी लगा मशीन की तरह बात कर रहा है लड़का, ये मैंने गोलियाँ चल रही धन धन. सो दैट वाज नॉट गुड. सेकेंड थिंग वाज,
ये पर्पसली आपने क्या कि इसको पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं करने दिया, जानबूझ के बीच में काटा? अच्छा ओके ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू नो। अचीवमेंट्स में तुम्हारी कोई अचीवमेंट नहीं है, तुम हिंदी मीडियम स्टूडेंट होके हिंदी मीडियम से पढ़ के आज अंग्रेज़ी बोल रहे हो, तो अगर तुम्हारी कोई अचीवमेंट नहीं है तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो? सोचना शुरू करो, जीवन में कुछ तो किया ही है और इसको तुमने तैयार नहीं किया। देखो हो सकता है हर कोई अपने बारे में कम सोचता है, जैसे मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया जीवन में, कहीं बार तुम नहीं सर ने कुछ किया है, बट जब कभी इंटरव्यू की बारी आएगी और मैं कहीं बैठा हूँगा, माता रानी की दया से मैं ऐसे दिखाऊंगा कि बस जय माता दी, बम फोड़ दी है। सो कई बार ज़रूरत है, एंड विद रीजंस, दैट इज़ वन थिंग। जो चीज़ आप इंटरव्यू में बोल रहे हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू टेल इट ट्रू। सो द मोमेंट यू सेड मेडिटेशन एंड इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट, इन माई ओपिनियन यू आर अ लायर। हिंदी में बता दो, लेकिन बता दो। अब ये था कि आपने किया ही नहीं मेडिटेशन, कभी किया जिंदगी में मेडिटेशन? से एक्सरसाइज किया सर, मेडिटेशन कभी नहीं किया, तो फिर काहे बोले भाई? वाई कोई नंबर तो मिल नहीं रहा, मेडिटेशन करता है लड़का, है पास कर दो इसको। सर बोलते करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, नहीं तो बोलते हैं, लेकिन जब किया नहीं है तो मत बोलो। या ये बोलो कि सर आई हैव हर्ड अबाउट मेडिटेशन बट आई हैव नेवर ट्राइड, आई वुड लव टू डू, बट बी ऑनेस्ट ना, नंबर तो मिल नहीं रहे, लेकिन माइनस जरूर हो गए। माइनस तो कर दिए बोल के। तुमने बोला कि सर मैं मेडिटेशन करता हूँ, जब सर ने ग्रिल किया तो तुमने बोला सर जय माता दी होगी, तो रायता तो फैला दिए, झूठे अलग बन गए, प्लस पॉइंट तो मिले नहीं। तो ऐसी कोई चीज़ क्यों बोलनी जो कि प्लस पॉइंट नहीं दे रही? जहाँ तुम्हारे प्लस पॉइंट थे अचीवमेंट्स के अंदर, वहाँ तुमने बोला सर अचीवमेंट तो कोई है ही नहीं, ले भाई, फिर डन हो गया। मुझे वाई मर्चेंट नेवी का आंसर अच्छा लगा, बस रटावा लगा। सीनियर हैरेसमेंट के केस में आई थिंक सो कि आपने भी सर उसे बोला नहीं, बट दिस इज़ वेयर आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजमेंट साहब। जब अब जैसे हम भी आपको कभी हैरेस करेंगे या करते होंगे, आप लोग कभी बोलते नहीं होंगे या बोल भी देता, मेरा फीडबैक खराब हो जाता है। देखिए होता क्या है, शिप के ऊपर सपोज कल को चीफ ऑफिसर इज हैरेसिंग हिम, द बेस्ट वे इज टू, अगर इसको रीच आउट करना तो बोलो यार हो सकता है गलती इनकी भी तो हो सकती है। अगर चीफ ऑफिसर डांट रहा है से इनकी गलती, अगर इन्हें लग रहा है कि हैरेस हो रहा तो गलत है ना सर फिर, बट निकल के नहीं आई। और दूसरी बात निकल के नहीं है, अगर आप ये पॉइंट आउट कर देते अपने फीडबैक में, आई वुड हैव अप्रिशिएट। शायद कि मिस हो गया, मुझे नहीं पता, बट इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि सर नहीं होगा तो मैं सीधा कंप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है कि सर हो सकता है मेरी तरफ से गलती हुई हो। हाँ जी सर, स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस की थी, इसका बोल सकता है, लेकिन इसने उसी लाइन को पे खत्म करके सीधा आगे बढ़ गया। ये तो आगे बढ़ा ही बढ़ा है, बट फीडबैक में आ जाता तो आई वुड हैव अप्रिशिएट। मैंने क्योंकि सारे पॉइंटर्स, तो सीनियर हैरेसमेंट को लेके द आंसर कुड हैव बीन मच बेटर। अगर मैं अब ये व्यूअर्स के लिए, क्योंकि है ये वीडियो आप बैठे हैं, वो पूरा कटा हुआ डलेगा, एंड प्लीज़ गाइज आप लोग भी आएंगे, आप लोग की भी ऐसी ही बैंड बजेगी। एंड ये फैक्ट है, यहाँ पर जितने बच्चे आते हैं अपनी बैंड बजवाते हैं, लेकिन फिर बाद में सिलेक्शन लेके जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आपको गुब्बारा बना दे हवा का, वाओ वाओ कितना बढ़िया बच्चा बोलता है। यहाँ तो ये है कि पुश करें। जब बच्चा खुद अपने आप को 2 नंबर देता है ना 5 में से, तो फिर वो 3, 3.5 के लिए स्ट्राइव करता है। अगर अपने आप ही 5 दे देगा तो फिर तो इंप्रूवमेंट का स्कोप ही खत्म हो गया। सो ये वीडियोस आप लोगों के लिए हैं, बस दैट्स इट। और वीडियोस ऐसे वाले नहीं बनेंगे फीडबैक के साथ, बस दिस इज द ओनली वन। बट हैविंग सेड दैट, सो यू कुड हैव डन बेटर ओवर हेयर। नाउ मैम एलपीजी में अगर आप प्रोपेन ब्यूटेन नहीं बोला होता तो मैं आपसे कहता कि इसका तो आंसर नहीं लिखे, समथिंग इज रॉन्ग, बच गया। फीडबैक्स के अंदर मुझे लगता है कि जो आपने बहुत अच्छे से सर, बड़े जेंटल वे में आपने क्वेश्चन पूछा, आई वाज रियली इंप्रेस्ड, बड़े अच्छे से पूछा आपने। बट कई बार मुझे भी लगा कहीं ना कहीं बहुत अच्छी क्लैरिटी, फ्रोजन लेक वाला था तो क्लैरिटी बहुत अच्छी शायद निकल के नहीं है, मुझे भी 2 बार लगे समझने में। तो शायद क्वेश्चन में थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए, चाहे आपको हिंदी में बोलना पड़े, लेकिन जय माता दी। एंड आंसर के केस में आई थिंक सो अभी तो बहुत मेहनत करनी है मुझे ऑलवेज। मैम ने बोला बहुत अच्छा, हर कोई अप्रिशिएट करने वाला मिलेगा, कोई डिप्रिशिएट करने वाले मिलेंगे, तो मैं उस कैटेगरी में हूँ, ठीक है। सो पुट इन मोर एफर्ट्स, अभी देयर इज स्कोप। और माता रानी करे जितने लोग देख रहे हैं, हाय अपने लड़के को डिमोटिवेट कर दे, जिस दिन वीडियो बनेगा मैं ही तुम्हारे साथ बनाऊंगा। तो खराब वाला ही बनाया, जब कामयाब हो जाएगा अच्छा वाले बनाओगे, मौका दोगे? पक्का? तो मेहनत करोगे, सबके आगे बोलो अब देखो जय माता दी, मेहनत करूंगा, रिजल्ट की गारंटी नहीं दे रहे हो, मेहनत की बोलो, मेहनत करूंगा, सिर्फ हार्डवर्क करूंगा और मेहनत तो ऊपर वाले देखते हैं। अरे नालायक, हार्डवर्क और मेहनत एक ही चीज़ है, फिर से बोल। रिजल्ट तो नहीं पता चलता, अपनी पूरी कोशिश करूंगा एग्जाम निकालने की। जय माता दी। मैं माता रानी तुम्हारे साथ है, टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।